This conference will now be recorded. The 2 days in master and slave in Jenkins. Master and slave infrastructure. So what is the concept of master and slave infra? तो guys actually में master और slave infrastructure बनाने का जो concept है वो आपके as per the आपकी company's requirements और आपकी company's project. Like I'm talking about, there are three different projects are available in like तो ड्राइंग बना लेते हैं अच्छे से. These are the three different projects are available in your company, then the more than three is available. So आपकी कंपनी के पास 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं. And you create a 3 repository, like this is your repository of Java repo, and this is your repository of like a Python, and like this is your repository like a PHP or any other. And now this is your developers. These all developers are available in these locations. These all are the developers. Like they're the 3 different teams, and each team there are the 500 developers or 200 developers and the 100 developers available. Each and every developer use a Git, and every developer use the Git, and developer write the code and upload or push or commit the code in your repository. So this is the concept of the Git and GitHub. Got it the point? Ravi, is it clear? Yes, sir. Now the one another part is we are using the Jenkins. We are using Jenkins. This is the Jenkins. And Jenkins, this is a Jenkins master. That is the primary node of the Jenkins. Up guys, the question is this, like there's a 500 users work in here, 500 users work in us here, and 500 users work in here. That is the total 1500 users are available. If the all 1500 user request managed by the single server, what happen? क्या होगा guys? Overload होगा? Yes or no, Ravi? Ravi, got it my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we can reduce the overload concept. That means if I'm create a multiple Jenkins servers, I'm create a multiple Jenkins server, and this server is called a slave. So these all is a like a Jenkins slave, slave 1, slave 2, slave 3. So these are the multiple. If I'm just create a job, so I'm create a job for Java, like when you create a job for that, so you can see the Java, that means this slave 1 used for the Java, the slave 2 used for the Python, and slave 3 used for PHP. So what happened? Your load is distributed. Also, you can set the dedicated username or the password for the every server. So वो हम आगे चलेंगे. I'm not introduced right now in the username and password and credentials or the permissions of the Jenkins. Now today the how to
use why we are using the master and slave concept. ये एक तरह से मतलब लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है ना? Yeah, this is Like the work traffic as a है. load balancer, but not in load balancer. This is the work we have defined the work कि मैंने सोचा कि there are the 3 टीम लीडर्स है मेरे पास, और मेरे पास कोई काम आया तो मैं वो पर्टिकुलर किस टीएल को देना चाहता हूँ. Okay. So that means the Java all user managed by the slave 1. Got in my point? Okay, sir. Everyone, is it clear? When you create, how to add master and slave. So guys, you can see the some terms. Pehla terms for each and every slave or master. The even not master, first you create a one user. हमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा. Then set the user password. Third, install SSH, sorry, enable SSH and install Java. So each and every system पे. इसके अलावा जो भी आपको लाइक अगर आप जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा रहे हो या किसी भी चीज से एग्जीक्यूट कराना है, लाइक अगर आप गिट से रिलेटेड है, गिट से रेपोजिटरी से अगर आप कोड हटाना है तो यू कैन इंस्टॉल द गिट. अगर आप डॉकर पे कंटेनर को यानी कि डॉकर पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो यू कैन इंस्टॉल द डॉकर प्लगइन. बेसिक वो प्लगइन्स आपके मास्टर पर हो, बट आपको स्लेव पर भी वो प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे. लाइक अगर आप मैं बात करता हूं आप नोड जेएस का कर रहे हो, सो यू कैन इंस्टॉल द नोड जेएस प्लगइन्स. अगर आप डीएसएल कर रहे हो तो यू कैन इंस्टॉल द डीएसएल. तो ये सारे के सारे टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं जो आपको इंस्टॉल. अगर आप कोई थर्ड पार्टी सर्वर लाइक आप चाहते हैं यहां से आगे एक और सर्वर पे आपका डिप्लॉयमेंट हो, यू कैन जस्ट इंस्टॉल द ओपन एसएसएच, पब्लिश ओवर एसएसएच. तो ये सारे प्लगइन्स आपके स्लेब पर भी इंस्टॉल्ड होने चाहिए. तो नाउ हाउ टू create a infrastructure. One more thing guys. So चलिए पहले तो हम इस infrastructure को, so now I'm using the this scenario in my lab. So you can see, you can just add it's like just a project 2 or like anything else. So now I'm using this, I'm using the one master and 2 slaves. So just I'm created 3 instance in a cloud. I'm just go to login with the AWS portal and I'm select the Mumbai region. Inside the Mumbai region, I'm just click on a launch instance and I'm using the Amazon Linux. And number of machines, I'm using the 3 choices here. You deploy in a single availability zones or different availability zones, choice is your. Then next, I'm select the space 10 GB of each. Next, and now select existing, security group, review, and launch. And I'm select the keep here. So guys, here I'm create a total 3 servers. So in this server, first we have create a master, then we have create a slave. Yeah, I'm just start the parallelly. So parallelly भी काम कर सकता हूँ. So now I'm just rename these all server. So I'm just click on Jenkins master. So this is my Jenkins master. This is a like Jenkins slave 1. And this is a Jenkins slave 2. Then I'm just login with all these server. So I'm just open the putty or you can use the any other. I'm using for this Mozilla Mobi Extreme. And I'm logging all these 3 servers. I'm just click on sessions and click on SSH. And now I'm just select the Jenkins master public IP and then paste.
And default username is, you know very well, the EC2 hyphen user. And type here is like yeah, like the key pair. So I'm select the key pair of the Linux. And now okay. So this is my master. I'm just right click and just click on rename tab and type the Jenkins master. So this is my master server. And now I'm just login to another server also. So I'm just go to the slave one and click public IP. So 1 minute. This is my slave one. And now I'm connect with the slave two. So guys, simply I'm just login with the SSH. And this is my slave two. And now I'm just start the Jenkins concept of the master and slave concept. So first we have just using the sudo sudo space su space hyphen and yum update hyphen y. The same command I'm start to everywhere. Sudo space su space hyphen and yum update hyphen y. And now sudo space su space hyphen and yum update hyphen y. Now the next option is in master. I'm available in a master, guys. So first I'm just install the Jenkins on a master. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ Jenkins इंस्टॉल कर रहा हूँ मास्टर पे. So now you know, you remember me, if you know कि like I'm just create a master, so I'm just click on install, or either is it yum install java this. So now first time created this file. Yeah, there's the one more option is available. I'm give you the one new trick for installing the Jenkins installation for the new way. So just a minute, guys. I'm explain you one more thing is the Jenkins job DSL code. Wait, no. Wait, I'm give you the one another things to install the Jenkins. So just a minute. Anyways, I'm explaining you in the next class. I'm just using the same process. So now first I'm just create this one, this file. First time install this EPL software. Now here, now here. So
he needs for the Java. So first time install Java, then again install the software. So yum install Java space -y. तो गाइस जावा हर सिस्टम पे होना चाहिए आपका। फॉर जेंकिन के लिए आपका जावा रिक्वायर्ड है। देन वी इंस्टॉल द EPL। Then I'm create a one file or add the repository link. So this is your file is and now I'm just add the code. Escape colon WQ. And now just add the update command sudo yum install. So we have just update the all dependency services. But now I'm installed Jenkins on a single server only. I'm not installed Jenkins to every node. So guys, जो Jenkins है मैं slave पर install नहीं करूंगा. I'm install Jenkins only on master. So how to install Jenkins on a master? Simply I'm just copy the command sudo yum install. But before installing the Jenkins, I'm just add this Jenkins setup. And then install the Jenkins. So you remember I'm not installed Jenkins to the every system. I'm installed the Jenkins only on master node. Got it, the Ravi? Yes, sir. And install the plugins. So the my Jenkins is installed, success, and now we will check the sudo service Jenkins start, or either you're using this command systemctl Jenkins service. So I'm just click here and now click.
And now there's the one more command to access the Jenkins password. So just simply you can just copy the master public IP and come to the browser and tap the colon. 8080 is the default port number, and you see your Jenkins is open. Now what is the password? So when you generate the password of admin password, so you can just copy this command. So this is the default password of the Jenkins. This is the location of the Jenkins. So I'm just paste it and now enter. So this is the password of the Jenkins. I'm just copy it. Also you need key when you need, you can just connect Jenkins with so you can install the like a yum instll install git. You can install the git docker -y. तो यू कैन इंस्टॉल द डॉकर और गेट अगर आप जो भी इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो वो सारे पैकेजेस आप इस पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो. So is it Jenkins is I think so up to date and they are the one services I think so. Jenkins Norage already installed. Okay, fine. So now I'm just come to here and paste and then continue. And now just I'm install the suggested plugins, recommended, and now it's start. Guys, जब तक ये हो रहा है, just we have start the setup of the master. Okay, so guys, I am asking कि अगर you know कि I'm just create a master, so यहाँ पर मैंने master पे complete कर दिया अपना setup. Now the slave पर मैंने अभी तक ना तो कोई user create करा, ना ही कोई password create करा, ना ही कुछ enable करा. Just मैंने क्या करा अपनी open JDK यानी कि मैंने अपना Java install करा है वहां पर. So now I'm just create a user, create a directory जहां पर मेरे Jenkins के कोड सेव होंगे, Jenkins की लोकेशन मैं सेट करूंगा. So simply I'm just go to the slave 1 और slave 2 दोनों तरफ सेम ही स्टेप्स यूज होंगे. Now I'm just go to the slave and clear the console. And now first we have start on a slave 1. First I am create a user. So user add and I'm give the username is called Jenkins Jenkins. Yeah, either I'm just give the username is like Ravi and the password is called ASD at 1234. So the sorry password not in password command is the PASS pass WD and ASD at 1234. So what a pass WD password and username is pass WD RAVI Ravi ASD क्या हुआ यार only one username may be specified. अरे यार command आएगी PA pass WD RAVI Ravi enter then password is ASD at 1234 and now the password is filled. I have to check it is too simplest. Okay. So the password is guys ASD at 1234. So now I'm create a one user and set the password. Now I'm create a one directories mkdir or I'm create a directory with the name of Jenkins. And I'm create a one directory. I'm create a users. Also I'm changing that this name is like host host and name is slave slave 1. And now I'm enable the SSH. So how to enable the SSH? You can just go to the vim vim or slash etc or etc there's the SSH and slash is the location is SSHD
under -config, and इसके अंदर जाके guys I'm just enable the root login permissions. So I'm just click permit root login. Hash का मतलब है कि disable. So now I'm just permit root login, yes, and then password authentication. I'm just adding this one more service, yes, and hash. And now escape colon WQ, and now restart the service SYSTEM system CTL SS restart SSHD, and now I'm just login with user. So sudo sudo Ravi. So wait a minute, su hyphen Ravi. So su hyphen Ravi Ravi. So now at this time you can see I'm just login with the Ravi user, and slave 1 का मतलब I'm login Ravi work in a slave 1. Now I'm create a directory. So जो directory मैंने वहां पे बनाई थी वो actually में directory मेरे को यहाँ पे बनानी थी. So now mkdir jenkins Jenkins, and now the cd Jenkins, and now the pwd. So this is my location of the Jenkins. So मेरा जो user है वो है रवि, यानी कि स्लेब पर मैं किस यूजर से काम कर रहा हूँ, रवि से, और जेंकिन के जो भी मैं एग्जीक्यूशन करूंगा कोड्स वगैरह मैं चाहता हूँ वो किस लोकेशन पे आके सेव हो, दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर. नाउ आई एम जस्ट स्टार्ट द सेम प्रोसेस इन अ स्लेब. So first I'm create a user. So you as your user add is like India or like a ICCP, and now the password is PASSWD. PassWD is ICCP, and now I'm set the password. Then I'm just enable the SSH service. So how to enable the SSH service? VIM space /etc /SSH /SSHD hyphen config, yeah, underscore config i4 insert, and enable the permit root logins. Because अगर आप ये SSH enable नहीं करेंगे तो आपका जो है मैं SSH के थ्रू आपके सर्वर्स को मास्टर पे लॉगिन नहीं कर पाऊंगा गाइस. So that's why I'm enable the SSH. अभी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ पूरा why I'm enable the SSH. And now escape colon WQ. I'm changing the host name. So the simply command host name is slave 2, and I'm just login sudo yeah su hyphen ICCP, and you can see on like a mkdir Jenkins, and now cd Jenkins and now pwd. So now I'm just slave and master. These two configuration is done. But we also require कि आप अगर मैं यहाँ पे git के साथ इसको connect करना चाहता हूँ या उनके साथ, तो we also install the git or other software also. So now I'm just click on the exit. I'm again come to the root user and now install yum install and give the name of like install a git -y, and same as I'm go to the slave and then put the exit command. I'm just exit from the user or come to the root user and yum install git space -y. If you need like a docker, you can install the docker also, the yum install docker docker. अगर आप docker से related कोई project execute कराना चाहते हो, so you can install the docker also, like yum install docker space -y. तो जरूरी नहीं है कि मास्टर आपके पास स्लेब पर भी वो पैकेजेस होने चाहिए. तो डॉकर इज अवेलेबल अमेजॉन लाइनक्स एक्स्ट्रा टॉपिक्स इज डॉकर.
Okay, no problem. So I'm just again login with slave 2. So the slave 2 is a SU hyphen ICCP. So this is I'm login with the ICCP and like a SU hyphen RAVI Ravi. And now I'm just login with both user. Clear guys, the slave configuration is done. Now I'm come to the master. Here I'm also enable the SSH. तो मेरे को यहाँ पर भी SSH सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी. So I'm just go to the vim/etc/ssh/ and now I'm just click on permit login. Escape colon WQ and SYSTEM system CTL restart SSHD. And now I think so I'm not so the system CTL restart. Okay, so now guys, why I'm just my Jenkins is also working, so I'm just put the name is ICCP info TCS stack. और गाइस यहाँ पर ये मेरा Jenkins का सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है. So this is my master server is ready. My slaves are ready. Now next, so first I'm check that my master server access the slave, yes or no. So the simply command is like SSH and the username is RAVI Ravi and @ what is the Ravi system private IP. So you can see the private IP of the Ravi system. So this is a Ravi slave 1. This is a private IP of this Ravi. So 172.31. And now I'm just click paste and now enter and now yes. And the password is ASD@1234. So now you can see the master ने मेरे Ravi system को easily access कर लिया है. Now I'm exit. Now I'm check the is use the another. So like SSH, the another slave 2 username is ICCP @ and now the IP of the ICCP. So I'm check the connectivity between master slave is working properly or not. So I'm just click here and now the paste and now click enter. Now yes. And so that the public key GSS key is that means कि मेरा जो master है slave 2 है उस पर प्रॉब्लम है. Why? Because मैंने यहाँ पे इसकी सर्विस को ना रीस्टार्ट नहीं करा था. So SYSTEM system CTL RESTART restart SSHD. And now I'm just login with Ravi ICCP. And now you can check again the same command. You can see the password and the password is ASD@1234. So now you can see the both server are accessing my master machine. Is it done guys? Is it clear? That means कि मेरे master easily access कर पा रहा है मेरे slaves को. Clear है? Ravi, is it done? गाइस देखिए हम और भी प्रोसेस कर सकते हैं कि मेरा ये बार बार पासवर्ड ना पूछे तो वो सारी सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं बट आगे मैं आपको Ansible बताऊंगा तो उसके अंदर कुछ और पार्ट मैं कवर करूंगा. सो नाउ अब आता है हाउ टू ऐड. सो यू कैन सी कि इफ आई एम जस्ट गो टू हियर एंड यू कैन गो टू द मैनेज Jenkins. आई एम जस्ट गो टू द मैनेज Jenkins or when you go to the manage Jenkins you can see the nodes, manage nodes and cloud. So I'm just click on nodes. So at this time only one nodes are available. यहाँ पर सिर्फ एक मास्टर नोड ही दिखा रहा है जो हम लोग जिस पर हम काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें अपने नोड्स का मतलब है स्लेव मशीन.
तो स्लेव मशीन्स को भी हमें इस मास्टर के साथ अटैच करना पड़ेगा। सो हमने भी अटैच नहीं करी है, हमने सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी चेक करी थ्रू SSH। सो अब मेरे को मास्टर के साथ, तो हाउ टू ऐड नोड्स, बट बिफोर एडिंग द नोड्स, जब हम नोड्स ऐड करेंगे तो वी नीड अ क्रेडेंशियल्स, हमें अपने उन सर्वर्स के क्रेडेंशियल्स भी चाहिए। सो बिफोर एडिंग वी हैव क्रिएट अ क्रेडेंशियल्स। उनको ऐड करने से पहले मैं क्या करता हूं, अपने जेंकिन के क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लेता हूं, अपने जितने भी नोड्स हैं उन सभी के। So I'm just click on the manage Jenkins. Inside Jenkins you can see the option is available manage credentials. यानी कि अगर आप अपने GitHub के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, Docker Hub के साथ अगर कोई भी चीज भेजना चाहते हो Jenkins से, when you send the any image any code to the Docker Hub, so you can create a Docker Hub credentials, यानी कि वो सारे credentials आपको यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। So I'm just click on, so यहाँ पर भी फिलहाल एक ही है जो मेरा डिफॉल्ट सर्वर है। So the global credentials, and I'm just click add credentials, and user with passwords, yeah, I'm just using the SSH user with private key और secure key। so आप किस तरीके से यहाँ पर अपना कर सकते हो। so I'm just click on the user, so I'm just click the user with password, the username is called Ravi, and the password is ASD@1234, or you can give the any ID. I'm not hiding the any ID, I'm just give the password and now click OK. So I'm create a one credential with the Ravi, and now I'm just again add a one more credential for like ICCP is another, and the password is ASD@1234, and now OK. I'm just create a both credential for the both users. That means the both users means कि there the two nodes, two slaves are available, and दोनों slaves पर जो मैंने users बनाए थे उन यूजर्स को यूजर और पासवर्ड को मैंने इसके क्रेडेंशियल्स में ऐड करा दिया है कि जब मेरा एग्जीक्यूशन हो तो ऑटोमेटिकली वो इन क्रेडेंशियल्स का यूज कर ले, वो बार बार पासवर्ड मेरे से ना पूछे। नाउ जस्ट हाउ टू ऐड नोड विद द जेंकिंस, तो नोड्स को आप किस तरीके से जेंकिन के साथ ऐड करेंगे। so now I'm just go to the dashboard and then click on manage Jenkins and manage node and clouds, and then click on new node, and node name, like I'm just give the node name is like SLAVE slave 1, and now OK. अब ये पूछे कि आपने slave 1 तो बना दिया है, so what is the next? The next is description. You can give the any description, number of execution, यानी कि आप कितना execution, यानी कि कितने टास्क है, कितनी कमांड्स आप एग्जीक्यूशन एक साथ करना चाहते हो। तो हम पुट द 10 कि मैं 10 एग्जीक्यूशन एक साथ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिमोट रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूशन होता है तो वो कहां पर जाके सेव हो। तो यू नो कि आई एम क्रिएट अ वन डायरेक्टरी टू ईच एंड एवरी स्लेव। सो मैंने यहाँ पे देखता हूँ लाइक CD Jenkins एंड लाइक अ PWD। मैं चाहता हूँ कि रवि का जो भी काम हो वो इस लोकेशन पे जाके सेव हो। तो नाउ आई एम जस्ट कॉपी this one and come to here and now the paste. Then next is label. लेबल्स का मतलब है कि आप जो ये सर्वर बना रहे हैं ये किस चीज के लिए सेट करना चाहते हो। सो आई एम आस्किंग कैन सेट द फॉर जावा, कि मैं चाहता हूं कि जावा भी मैं अगर सर्च करूंगा तो ये मेरा सर्वर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज यूजेस इज use the node as much as possible, so I'm using this, and launching method, the launch agent by the connection into the master, yeah, launch agent via SSH. So now I'm already configured the SSH, so that's why I'm just adding the SSH. Now the host, we have just put the private IP of this system. So what is the slave private IP? I'm just come to the slave 1. This is a private IP. I'm just copy the private IP. Control V, and credentials. I'm already create a credential. That means credential means username and passwords. So I'm select Ravi.
and host key verification. So now I'm select here the manual trust key verifications and then save. Now I'm just add the another same process. I'm add the another node. So I'm just click on node and like slave to permanent agent, then click on OK, then slave to number of execution 10. What is the location? So I'm just check the location of the slave 2. Is it I'm type the PCD Jenkins and the PWD. This is the location of the my slave. Control C. Labels, now I'm just create for like a Python Python. Use the method of possible launching method from through the SSH. The host name, I'm just copy the private IP. तो choices जो आप public भी ले सकते हैं, but in AWS आपका public IP change हो जाता है. That's why I'm using the private IP. अगर आपने statically IP map करा हुआ so now I'm select the credentials and manual and now click save. So guys, you can see the slave is 100 successfully attached. It's syncing. So देखिए यहाँ पर अभी slave 2 पर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, बट ये 100 प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा. तो देखिए मास्टर कितना स्पेस ले रहा है, स्लेव क्या ले रहा है. सो ईच एंड एवरीथिंग इज अप टू डेट. एंड नाउ आई एम जस्ट click on manage Jenkins or like and then again go to the manage Jenkins, then manage nodes, and you can see the all nodes are connected with each other. So it's the successfully my nodes are connected. When you execute any file या any command in a Jenkins, so अगर आपको कोई भी execution कराना है, कोई भी चीज आप execution कराना चाहते हो guys, so simply you can just create a job. Like I'm create a job. Yeah, either I'm just first of all I'm just adding the one more server. So I'm deploy the one website. Like मैं एक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जेंकिन के थ्रू हो. सो बट मेरे को गिट भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. सो मैं आपको सिंपली एग्जीक्यूशन करके दिखा देता हूँ. सो सिंपली एग्जीक्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट दिस इज माय द गिट रेपोजिटरी इज अवेलेबल. This is my GitHub is available, or inside the GitHub there the one repository is available like demo like a Jenkins courses is available. Yeah, my Docker demo, these are the some files are available in my repository like a Docker Compose, index.js, package log JSON. So these are the one Java project is available. Now I'm execute this Java project to the Java server. So I'm just copy this repository link and now just go to the create a job. So I'm just click on a Jenkins. Wait, is in go to the Jenkins dashboard, and first of all I'm just install the plugins. So now I'm just click on the manage plugins. और मेरे को अगर जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है, तो फर्स्ट हम सिलेक्ट द लाइक node node.js. So now I'm install the node.js and like a node and label parameter. So now I'm just install the simply the node.js. तो मेरा अगर कोई node.js का है तो node.js, या मैं अगर मैं बात करता हूँ मेरे का DSL प्रोजेक्ट है तो job DSL. So where is job DSL is available? XML to job DSL, or I think job DSL is available. And now I'm just install without a restart. So I'm just click on install without a restart. So now I'm install these plugins. Or after install these plugins, I'm create a project. So you create a DSL project or also you create any other project. So you can easily create these projects through Jenkins. So what is the process? So first is done, then we have just execute the next.
So what is the next? So I simply, just a minute guys. So now I'm just install, and now I'm install the Jenkins and create a new item. So I'm just click on a dashboard, or inside the dashboard I'm just click on new items. I'm tap the like NODE Node.js project, like Node.js. I'm just click on freshly project and then click on OK. Now the one option is available, the restrict where this project can be run. So now I'm just click this option and search the label of Java. That means if I'm select the Java, that means the node 1 execute this project, or either if I'm run the like Python, so it is execute by the Python, that means the slave 2. So now I'm select the Java. What is the code? That pull the code through a Git. Got it, my friend? This code pull the from a Git. So now what is the repository of the Git? I'm already copied the repository link. Secondly, just option is like auto. So अगर आप चाहते हो कि आपका automatically execution हो, so you can just use the poll SCCM. Poll SCCM means like the every day, every minute, every month, week, or everything. Now the next is like a build process. Now the next option is like a build process. So build process की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे guys, is simply कि आप कोई भी project यहाँ पे करना चाहते हो. So I'm just go to the build. Click on build and write the process job through the DSL. And what is the DSL script? So wait, it's not show the DSL script. So here is this come for the DSL. So it's not DSL because I'm just install the Node.js package on a master, but I'm install the Node.js package in a slave. So now I'm just simply execute the normal project. So now this is my the repository, and now I'm just add this repository, and I'm just come to the execute the project like every day or every week or every month, and now I'm just execute this post build action, and I'm just click on post build action is called where is publish. Wait, enable get. Wait, I'm just get add a build. Ignore. Where is option is 1 minute, guys, 1 minute. I'm just close it and clear add build options, and oh, I'm not install the publish over SSH. So I'm asking this one. I'm just add this repository code and now click on a save. और गाइस अगर मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है और मैंने यहाँ पे SSS दिया है, so you can see कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी क्या होगी, जॉब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी विद इन अ मिनट्स. बट वो एग्जीक्यूशन किसके थ्रू होगी, वो जावा के थ्रू मेरे होगी. सो आई एम नॉट एक्सप्लेन कि मेरे को यहाँ पे अपना एक और मल्टीपल सर्वर्स बनाना पड़ेगा. जैसे लास्ट लैब के अंदर मैंने करा था कि मैं पर्टिकुलर किस लोकेशन पे ऐड करना चाहता हूँ. लाइक आई एम जस्ट एडिंग कि मेरा जो जावा का प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर चाहता हूँ कि इस सर्वर पे मेरी Node.js की एप्लीकेशन रन करें. तो नाउ आई एम क्रिएट वन मोर सर्वर, देन आई एम ऐड the publish over SSH. I'm install the publish over SSH and now add this server. तो then मेरा execution कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा.
तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? So now I'm explain this lab as a project 2 in a next class. So is it done? How to create a client and server? तो देखिए मेरी फर्स्ट जॉब डन हो चुकी है, मैंने दोबारा से सेम जॉब को एग्जीक्यूशन कर दिया है, तो मेरी both jobs are done. So you can see the what is the output of this job. So I'm just click on this job and now just click on a console output. It's the output like a GitHub, ICCP, Docker, demo, Git. Okay, and you can see this is the success. तो ये मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है. दैट मीन्स कि मैंने जो वहाँ पर रेपोजिटरी एडिट कराया था वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है. एंड यू कैन सी और यू कैन टाइप द ls. तो ये देखिए रिमोट टिंग और ये वर्क स्पेस मेरा जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है. तो cd वर्क स्पेस. तो आप जेंकिन के थ्रू कोई भी काम करेंगे तो आपके इस वर्क स्पेस में आके सेव होगा. टैप द ls, द node.js, जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था node.js के नाम से प्रोजेक्ट था. तो आई एम जस्ट गो टू द cd node.js एंड देन टैप द ls. तो देखिए ये सारी की सारी फाइल्स वहां से जेंकिन ने कहां पर आके सेव कर दी, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे. आप देखना चाहते हो तो डॉकर कंपोज, इंडेक्स जेएस, ये सारी की सारी फाइल्स मेरी कहां पर थी? रेपोजिटरी के अंदर थी. यू कैन सी द माय रेपो, डॉकर, डॉकर कंपोज, इंडेक्स, पैकेज लोग, पैकेज डॉट जेसन. तो ये देखिए सारे की सारी चीजें मेरी कहां पर हैं? दिस ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय स्लेव 1. बट अगर आप स्लेव 2 पर जाके अगर इसको चेक करते हैं तो लाइक आई एम टैप द ls. तो देखिए यहां पर आपका वर्क स्पेस नहीं आ रहा है. गॉट इट रवि? देयर इज नो वर्क स्पेस इज अवेलेबल. बट वर्क स्पेस कहां पे शो हो रहा है? ओनली रवि पर. अगर आप चाहते हो कि ये वाला सर्वर एग्जीक्यूट करे यही कमांड, तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द अगेन जॉब्स, आई एम बैक टू दिस प्रोजेक्ट एंड नाउ आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर. और कॉन्फ़िगर में जानने के बाद आई एम जस्ट चेंज द लेबल. आई एम जस्ट आस्किंग कि नहीं पाइथन वाला सर्वर मेरी जॉब को एग्जीक्यूट कराए, रन कराए इस प्रोजेक्ट को. आई एम टैप द पाइथन and now save and now click on a build. So now the build 3 is start. तो ये क्या कर रहा है? वहां से मेरी उसको पुल कर लेगा, यानी कि GitHub से मेरे डेटा को पुल करके अपने पास सेव कर लेगा. आगे का काम मैंने नहीं दिया कि इसको आगे क्या काम कराना है, तो वो एग्जीक्यूशन कमांड्स मैंने अभी इसको नहीं दिया. सो मैंने उसको दिया है कि इट्स पुल द फ्रॉम GitHub. तो मैंने जैसे यहाँ पे बिल्ड करा तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरी उस फाइल को वहां से क्या कर लाएगा? मेरे उससे से पुल करके कहां पे सेव कर देगा. यू कैन सी कि अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ls करता हूं तो देखिए आपका वर्क स्पेस भी आ गया. एंड नाउ द cd वर्क स्पेस एंड नाउ द ls. यू कैन सी द node.js, प्रोजेक्ट का नाम node.js ये था, देन cd node.js एंड नाउ टाइप द ls. और यू कैन सी कि उसने जो भी सारी रेपोजिटरी की फाइल थी वो सारी की सारी मेरे पास सेव कर दी. Now the same process I'm again repeat it. Now I'm just create a one more project. So now I'm just create a new project. Again I'm just create a new project, and now I'm just create a new items and I'm set the like a Python. I'm create a new project through the Python project 1. And now just click on the freshly project and now click on OK. And now I'm just check the repository. So now I'm just click my repository is I'm just using the another repository. So now the another repository like Jenkins codes. So these are the repositories available. I'm just copy this code and now just click on git and now I'm at the repository and now save and now click on a build. So at this time I think so I'm select not select a label. So guys, I'm not select the label. If I'm not select the label, that means is execute by the master only. अगर आपने लेबल सिलेक्ट नहीं करा है तो देखिए it's not show in a here in this system. Like I'm just click on cd dot dot and now the ls. The Python project is available in Python project is 1 is available now is from like a exit exit sorry cd dot dot wait 1 minute and like a ls. No, it's coming for the Python. I think so मैंने add on कर दिया था.
तो वहां पर मैंने पहले सिलेक्ट करा हुआ है। सो देखिए यहाँ पर आपका पाइथन प्रोजेक्ट शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पर आपका पाइथन प्रोजेक्ट शो कर रहा हूँ। नाउ द CD Python project 1 और I tap the LS, so you can see that जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे कर दिए। So got it, the how to work the so Java, like what is the use of the master and slave concept is clear, Ravi? Guys, everyone, is it done? यस सर। So enough for today. सर एक बार वो जो आपने नोटपैड पे लिख रखा है ना, एक बार वो आप शेयर कर देना। Okay, ma'am, share in a group, don't worry. So, and tomorrow I'm just told the Jenkins, again Jenkins server, but I am using the scripting. So how to create a self-scripting part? You can add the each and every point, and now then you execute the project. So and कल मैं आपको Jenkins installation बताऊंगा, but in different तरीके से. So it's more easy. You can just using the simple scripting part. So now guys, thank you. So this is the one more important task, ki how to add the multiple nodes and how to add execute the commands, कि आपको कोई भी project अगर execute कराना है through the nodes, so either node 1 or either node 2 or node, the other name is like a slave 1, slave 2 and slave 3. So this is a way you can add a node client and server infrastructure. So thank you guys and all the best guys. So वो करते हैं, bye bye. Okay Ravi. थैंक यू सो मच। Okay dear, bye, take care.